welcome back to another enlightening episode of the We Talk. Our topic for today is something that affects us all, a grave threat that the entire world has been facing and fighting for decades. It is a deadly problem that is killing people not just today, but is going to take millions of lives in the coming years if we don't find a solution in time. And we, each one of us, are equally responsible for its spread. I'm talking about antimicrobial resistance, or AMR. Let me tell you quickly what AMR is. Antimicrobial resistance happens when pathogens like bacteria, fungi, virus, and parasites change over time or mutate and no longer respond to medicines we use to kill them. It makes infections harder to treat, it leads to longer illnesses, more hospital stays, and even higher death rates. अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो हम मेडिसिन या ड्रग्स यूज़ करते हैं टू किल इन्फेक्शंस, टू ट्रीट इन्फेक्शंस, वो काम करना बंद कर देती है. एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट होता है, नॉट ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो एंटीबायोटिक लेते हैं, बट विद टाइम वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है उस एंटीबायोटिक के और काम करना बंद कर देता है. तो जब अगर कभी दोबारा वो सेम इन्फेक्शन होगा तो वो सेम एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, आपको स्ट्रॉन्गर या कोई दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी टू गेट बेटर. Without effective antibiotics, even minor infections can become deadly because हमारे पास medicines नहीं होगी to treat them. Reports have suggested that annually around 50 lakh people all around the world die due to AMR. And India, it is a big hotspot, a hub, with 10 lakh deaths associated with AMR in 2019. Such a critical problem requires immediate attention and solution. So we are asking a big question today. Is the Indian government doing enough and in the right direction to tackle AMR? To help us understand this, we have two teams of experts with us on the panel today who have vast experience in their respective fields. Representing the research and innovation side, we have Dr. Anurag Pyasi and Mr. Mukesh Kumar. They'll share with us the insights of the science behind AMR and the efforts being made to combat it. And on the other side, we have Mr. Rajiv Handa and Mr. Rajesh Kumar Bali, who are representing the market and healthcare side. They'll discuss with us how the hospitals, the doctors are responding to this challenge and raising awareness for this critical issue. So, sir, now that we know what is AMR in brief, I would like to discuss what are the factors that are contributing to AMR, basically. I would like to add something about the AMR. AMR is a naturally occurring process in bacteria in which bacteria develops new ways to avoid the effect of antibiotics. If we talk about the ways how bacteria develop it, like there are different kinds of mechanisms which are evolving in the bacteria, like overexpression of efflux pump, membrane impermeability, production of beta-lactamases. Beta-lactamases are enzymes which inactivates the beta-lactam ring present in the antibiotics, and alteration in the targets. These are the some common mechanisms by which bacteria develop resistance. Now coming to your question, what are the common factors contributing to AMR? There are several factors which are contributing to AMR, like easy access to medicines over the counter in medical store, self-medications through the information gathered from the internet or social media, overuse and misuse of antibiotics, simultaneously use of two or multiple antibiotics. There is no non-availability of the clinical labs for culturing and antimicrobial susceptibility testing, empirical use of antibiotics, unethical use of antibiotics. These are common factors which are contributing in AMR. Okay. So, sir, self-medication जैसे एक फैक्टर है, तो डॉक्टर्स के एंड से वो प्रिस्क्रिप्शन भी होता है क्या इन चीज़ों को लेके? डॉक्टर, अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर का रोल इसमें मैं ज़्यादा समझता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज यू हैव सम इन्फेक्शंस, doctor doesn't know whether it is viral infection or bacterial, because antibiotics are mainly prescribed to counter the bacterial infection,
not viral infection. Viral Suppose infection, right. you have cold or flu and you go to doctor. Doctor simply prescribe you some amoxiclav or like something, Right. and but there should not be given antibiotics because these are for bacterial infection, not viral infection. Right. So I think this over prescribing practice by the doctor contributing the development of AMR. सर आप लोग डॉक्टर But by the time the doctor comes to know, okay, whether it is a viral or bacterial infection, it takes around 24 to 48 hours to 72 hours basically. But don't you think it becomes a very difficult for a doctor to keep a check on a patient, or rather to maintain his symptoms at the lower end side basically, or to reduce his infection, how it is possible basically? This is what my question is exactly, because it is very challenging for the doctor, because Yeah. they have to treat a patient within 48 hours or 24 hours. They have to show that results. Otherwise, patient is very impatient. In fact, he is not at all going to tolerate these things. Yeah, Doctor Pikar, he is a useless doctor. Yeah. So that is what the biggest challenge is. And even diagnostic Yes. tests take some more time. Absolutely, because it requires 48 to 72 hours to get exact data. At least 48 to 72 hours. it Anyway, will take. there is a rationale for usage of antibiotics in viral infections, because there are viral infections reduce immunity of patient, and in reduced immunity, chances of bacterial infections occur. Further load So can be- to prevent possibility of bacterial infections, also sometimes you need to give prophylactic antibiotic also. So antibiotic मतलब it's a very complex situation, और clinicians के लिए important होता है patient की outcome को improve करना. They have a responsibility towards True. their patients' lives, so they make a judgment call to give best possible choice which can help the patient basically recover from infection. I think antibiogram may be a solution for that Yes. particular thing, Yes. and empirical therapy can be suggested on that basis only. So that may be described by sir also. Yeah. Yes, every hospital should have its own antibiogram. And But sir, we don't have the infrastructure. In our Indian hospitals, you just go to any Yeah. of the hospital, it becomes very difficult to maintain an antibiogram. yeah. Even to make an antibiogram, you require a lot of efforts to be made, lot of testing to be done. The education is much more important rather. So Yeah. it becomes very difficult and challenging in the Yeah. present scenario. It looks very gloomy if you look into theoretically aspects, but practically it is very, very difficult. Agreed, sir. This is a major pain point for this particular thing in AMR scenario for the India particularly. So awareness for antibiogram and empirical therapy, because overuse is a major reason for the Yes. resistance in India. सर गवर्नमेंट की तरफ से Particularly. जैसे एक शेड्यूल एच के बारे में आया था प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट वो डायरेक्शन से लेकिन वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी एग्जीक्यूशन पार्ट पे Execution- अभी भी लैग कर रहा है वो शायद. गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के बाद गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है. सी हमारे यहाँ पे हर टाइप की पॉपुलेशन है. देखिए, एक हायर इनकम ग्रुप है, एक लोअर इनकम ग्रुप है. हमने पॉलिसी तो बना दी, लोअर इनकम ग्रुप को यदि एक केमिस्ट सस्ते में मेडिसिन दे देता है, उसको क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कराने की या लिखवाने की. Right. वो उसकी भी कंसल्टेशन पे करेंगे, एंड देन इट इज़ बेटर ही शुड गो डायरेक्टली टू द केमिस्ट एंड टेक दैट मेडिसिन. इस जस्ट एक थोड़ा सा प्राइस बेनिफिट को देखने के चक्कर में ये हम अपनी उस स्ट्रीमलाइन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फिर वो जो भी मेडिसिन दे रहा है, ही इज सेटिस्फाइड, ही इज हैप्पी विद दैट. सो शेड्यूल एच का इम्पैक्ट है ओटीसी सेल को काउंटर करने के लिए? होना चाहिए, होना लेकिन चाहिए। है नहीं. ये बट शेड्यूल एच की डेफिनेशन क्या है? शेड्यूल एच में ये है कि आपको They विदाउट maintain- प्रिस्क्रिप्शन prescription without cannot prescription they cannot give. किस कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक? ऑल एंटीबायोटिक्स कम इन शेड्यूल एच और all. Yeah. ऑल एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक्स आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रोक्योर परचेज नहीं कर सकते. एंड आई थिंक उनको नोट भी करना होता है केमिस्ट को कि वो They have to maintain a ratio. मेंटेन करते हैं वो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए, कोई भी एंटीबायोटिक्स आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कहिए हमें सेप्ट्राइकिन दे दो, पॉलीमिक्सिन, इवन पॉलीमिक्सिन भी दे देंगे. पॉलीमिक्सिन लास्ट Actually, I think base root of this problem lies in the whole medical system of the India, because doctor-patient ratio is the main basic thing where we lacking. The ratio is very irrelevant, and that's why all these things are happening, because doctors are not giving too much time or that much time that is required for this particular type of diseases. So
the problem started from that only, and Right. after that our paramedical staffs are not too much equipped with that type of resources and knowledge, like nurses, pharmacists, and all other paramedical staffs are not that much aware about these things. So all these things holistically make this problem more intense. तो सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, अगर वो कुछ रूल बना भी रहे हैं तो government is doing their part at a very good pace, and they are working But sir, on अगर that. ground reality But के our साथ ध्यान रख के नहीं our तो- presence, our area, and breadth and width of our country, that is, and population, that is a very big factor. सर That और is भी जो right. इनिशिएटिव्स हैं जैसे नेशनल एक्शन प्लान है, Yeah. इंडिया ने बनाया है, Even every state is doing their big part, the national action plan, and they are making state action plan, and accordingly they are improving that plan according to WHO guideline. सर And फिर वही आ जाता है ना yeah. वो कि प्लान तो वो बना रहे हैं बट Yeah. इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, जैसे सर ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ शेड्यूल है। एच का भी नहीं है तो नेशनल हुआ एक्शन है। वो प्लान देखिए हर एक Implementation हॉस्पिटल भी अपना एंटीबायोग्राम सोचता है, मैं बनाऊंगा 2 महीने बनाएगा, 3 महीने बनाएगा, देन अगेन लेटर ऑन दे लुक इनटू इट, इफ कंसल्टेंट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट, व्हाई टू वेस्ट दैट एनर्जी ओवर देयर. सो वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द डिपार्टमेंट या कई हॉस्पिटल में हमारे आईडी फिजिशियंस नहीं है, वी हैव गॉट अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स स्पेसिफिकली डिवोटेड फॉर एंटी इन्फेक्टिव्स. बेसिकली इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग. I think so. अब एक सर्जन है या दूसरी स्पेशलिटी, वो कहता है मेरा काम है सर्जरी करना, फॉरगेट अबाउट द इन्फेक्शन. ओके फाइन, वो माय अदर कलीग्स विल लुक आफ्टर दोस, उसकी नॉलेज, वो जो मर्जी आए एंटीबायोटिक शुरू कर सकता है. सो दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्ट और रादर स्ट्रिक्टली फॉलो द एंटीबायोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल विच इज the mandatory for, and the government should rather execute a rule sort of thing. Basically any hospital, either it is 20 bedded, either it is a 40 bedded, if they are using anti-infective, they have a small microbiology setup over there. They have to maintain an antibiogram in the hospital setup or a nursing home setup. Beside antibiogram, ICMR has released some guidelines for the implementation, like infection prevention and control for healthcare settings, treatment guidelines for bacterial treatment guidelines for antibacterial use in bacterial infections. But hospitals are not following these guidelines also. Actually, our medical system and paramedical staff and all these type doctors, even they are not have enough time to put their effort here on AMR. So first of all, whole ecosystem should be in the line of this particular thing. Awareness should be there, and after that resources to be given for this particular thing. Yes. After that we can chase. सर टू ट्रीट क्रिटिकल इन्फेक्शंस डॉक्टर्स आर आल्सो मेकिंग कॉकटेल्स मिक्सिंग 2 or 3 मेडिसिन्स जिसकी वजह से फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस हाँ, डेवलप yes. हो रहे हैं. Hmm. तो क्या वो सेफ तरीका है, इज इट अ गुड अल्टरनेटिव टू टैकल AMR? If they are rational, then that is a good part, and they are showing good results. But if they are irrational, these combinations are irrational, then it is very dangerous thing. So what do you think? FDCs But see, sometimes practically we have to really look into it. If their experience says okay, उसको gram positive भी नजर आ रहा है, gram negative भी हो सकता है, mixed है अभी, he has not get the data. What my colleague Dr. Pyasi has said कि हमको 48 to 72 hours report आने में लगेगा. So by that time he has he has got some time to play with the patient rather, because objective उसका ये है कि we should get the treatment done. पेशेंट का किसी भी तरीके से फीवर डाउन होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स नीचे जाने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. Sir, यदि WHO वो is नहीं not आया, recommending most of the FDCs. Ban हो रहे हैं काफी FDCs. I think we are kind of mixing things here. It's not about fixed dose combination, but initially when you said giving 2-3 antibiotics together, so there are doctors mostly go by evidence-based practice. Evidence means there are studies which show that these 2 drugs, if given together, they are going to offer benefit over single drug. So when they consider different mode of actions of both drugs, and then possibility of killing of bacteria is higher, then they consider those antibiotics. And of course, side effects of those drugs are also there. This is one scientific aspect. The other aspect is, as you said, FDCs are fixed dose. There is no scope of variation of dosage there, and there are certain in certain combinations even compatibility issues are there, where in books it is mentioned that those 2 drugs cannot be combined, but even then there are available
in fixed dose combinations. So that is one aspect which is But I needed to believe be that considered. is for very specific class of patients. Fixed dose combinations are always for a very specific class of patient. But if it is started using to XYZ number of patients, so that is a problem basically. Yeah, That is why overuse. government always restrict the usage of fixed dose combinations basically. एफडीसी ऐसा नहीं है कि सारे एफडीसी को गवर्नमेंट बैन कर रही है, उन्हीं एफडीसी को बैन कर रही है जो इरेशनली हैं, क्योंकि एफडीसी में आप दो एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर रहे हो जिनकी मैकेनिज्म कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं। अगर वो आपस में सिनर्जिस्टिक हैं या एडिटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं कि उनको हम दोनों को कंबाइन करने से कोई सिनर्जी आएगी या उनका स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा, इफिकेसी बढ़ जाएगा, तो उनको नहीं बैन कर रही, लेकिन वो आपको बाई एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक्स उठाया और मिक्स करके मार्केट में कर दिया, उनका आपको पूरा मतलब डोजिंग रेजिमेंट डिफाइन होना चाहिए, इफिकेसी डिफाइन होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, वो पूरी स्टडी होनी चाहिए। तो अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट विथ एविडेंस आप DCGI या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको दे रहे हो तो उनको बैन नहीं कर रहे। Because So- what we did with Elorus also, like हाँ. we have provided them the sensitivity test basically just to look into in vitro first, and then once you get the sensitivity on that basis only you should start using on the patients. And now the consultants, as the experiences shares, basically the consultants also got very good response with that formulation, Elorus especially what we have launched. सर वही फार्मा कंपनीज पे अगर हम आते हैं, हमने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट की बात की, फार्मा कंपनीज एज हम भी पार्ट हैं उस चीज़ का, तो जैसा मैंने पढ़ा था कि न्यू एंटीबायोटिक कोई डेवलप नहीं हुआ फॉर ऑलमोस्ट 4 decades। तो ये हाँ। डिस्कवरी वॉइड भी एक टर्म यूज़ की गई है इसके लिए, तो क्यों फार्मा कंपनीज AMR रिसर्च को प्रायोरिटी नहीं दे रही है? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स या कमर्शियल्स जो फाइनेंशियल एंगल है वो नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं एक्सेस का, जैसे आप कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डेवलप यहाँ पे स्टीवर्डशिप भी करनी पड़ती है। ये दिस इज़ द ओनली वन थेरेपेटिक सेगमेंट वेयर यू हैव टू प्रमोट योर एरिया ऑफ थेरेपेटिक सेगमेंट बाय स्टीवर्डशिप। सो एक्सेस को भी आपको कंट्रोल करना है इस ड्रग की, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आ जाए, जितना अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स को उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा उस ड्रग का, तो वो काम नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली आपकी मार्केट ही खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फार्मा कंपनीज को अगर ऐसी ड्रग के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जो कि अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद मार्केट में नहीं रहेगी, तो वो उस पर इन्वेस्ट कैसे करेंगे? उनके वाइबल जो सोर्सेज हैं या जो R&D सोर्सेज है उसके ऊपर इतना पैसा लगता है, वो अल्टीमेटली कहाँ से रिकवर हो पाए, ROI कहाँ से आएगी? अल्टीमेटली दिस इज द मेजर फैक्टर ड्यू टू विच द एंटीबायोटिक इवन बिग फार्मा कंपनीज आर नॉट into this particular segment now. तो सर ये जो But I think global government should fund to these research institutions basically, Yes. those who are definitely doing some innovative or rather research on So anti-infectious. because I think there's a dire need to address this global dry pipeline of Definitely, sir. antibiotics. That's Now important. the government is, Indian government is also doing at this particular part, and they have make AMR as a moonshoot area for their schemes and policies. Now they are launching a 15,000 crore scheme for the R&D, pharmaceutical R&D, and they have chosen around 6 parameters, 6 areas, which are the moonshot area for the research, okay. and AMR is one of them. So I think this is very beneficial for the research angle. I would say Definitely, rather you definitely. can much more amount, and you should not give more pressure to us basically to generate the revenue. Even the sales. that scheme structure align the resources in particular direction for AMR. Like they have given a project. They are calling request for project from pharma companies, good. and then they are giving around 125 crore to 150 crore per company for 5-year development of a particular new drug in Wonderful. that particular area. I think this is good initiative what they have taken. Yes. I think this is something I good. think we also got some financial support from the government. That is for production linked incentive scheme. Yeah, That yeah, is for and- manufacturing. But now they are floating for this research, research, you know. particularly for research.
सर अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आपने बताया था, लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू AMR. तो जनरली देखा जाता है इंडिया में भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है अबाउट AMR. बट WHO ने एक पूरा वीक नवंबर में डेडिकेट किया है वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक. तो इस तरह से हम इंडिया में भी कुछ कर रहे हैं इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के, फार्मा कंपनी एज फार्मा कंपनी हमारी तरफ से कुछ initiatives हैं. वीनस तो करती है, अब एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है Every 2013 year में. we- Actually, we are Every pioneer year- in AMR awareness since 2 decades or more than 2 decades. But now some companies are also coming, and in India also they are doing good work. And sir, global collaborations में Yeah, भी global collaborations are there. We are also part of AMR Industry Alliance and India Innovation AMR Hub. We are also part of that. So awareness is multi-sectorial, and if we go for awareness purpose only, healthcare is one part, animal is other part, then environment is other part, and Correct. All food factors. sector is other part. So awareness in all these sector is necessary to prevent this AMR problem. that is one health. Yeah, concern. one health concern. Yeah, actually last year also in the Awake India program also, as per our campaign from Venus basically, we have gone to the grassroots level basically to the general public, just to know what they are aware of anti-infectives, antibiotics Yeah. basically, AMR, antibiotic resistance basically. But it was very surprising. Very few of them are aware of some antibiotics. What Yes, are these yes. antibiotics? Which are these class of antibiotics basically? Rest all they said whenever there is a flu, better we should take antibiotic just to get rid of that as early as possible. So even we visited all chemist counters also, and we have taken that commitment from them that we should not sell medicine without the doctor's prescription. So that initiative we have just started, and I think this year also will be very aggressively following these activities basically, and hopefully this awareness is very very important, very challenging. I think it should be, this is my strong recommendation, rather this should be initiated from the school level. Yeah, That's good. I heard There should be something, some subject, some topic, some general activity where it should be educated to the kids that these are antibiotics basically. We should not use these antibiotics, nor our any other family member should use this antibiotic without the doctor's prescription or the advice. Because patient awareness always make a difference. Absolutely. So we are one of the few pharma companies who have been dedicatedly working for AMR. तो जो ये इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे एंगल पे हैं. तो आप ये गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं या वी एज वीनस प्लानिंग टू Venus can take initiative, and government they should decide by the time they should take any such decisions. It's always welcome. But yes, we can take initiative any Because day. प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोई भी शायद अकेला नहीं कर पाएगा, और सबको साथ आना ही पड़ेगा. बिल्कुल. अकेला वीनस कुछ नहीं कर सकता. डेफिनेटली. वीनस तो पिछले कितने सालों से AMR पे काम कर रहा है, लेकिन उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट हाँ, नहीं आ पाया. impact नहीं Collaborative- सपोर्ट काफ़ी कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए, और जो फार्मास्यूटिकल लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनको भी आगे आना चाहिए. तो AMR में जितना वीनस काम कर रहा है बाकी कंपनीज में उतना काम नहीं हो रहा है. Okay, so overall we can say that the government has been working endlessly to create solutions for AMR. However, a problem as grave as this requires more diligent steps and stringent monitoring. So as we have gathered from this debate, that easy access to medicines and self-medication are a major factor contributing to this. Yes. And there are non-availability of clinical labs, जिसकी Yes. वजह से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. डॉक्टर पेशेंट रेशियो जैसे सर ने बताया इनअप्रोप्रिएट है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है. इवन लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं हॉस्पिटल्स में. Yes. रिसर्च एंड पे भी फंडिंग लैक हो रही थी, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में आ जाएं. सर के हिसाब से जैसे सर ने बताया था, अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, जो कि स्कूल लेवल से स्टार्ट करें हम, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट एक सर ने हमें दिया है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. सो इसी तरह से वीनस भी जो मेजर्स ले रहा है, इस तरह से हम और आगे करते रहेंगे, एक्सपेक्ट करते रहेंगे. बट बिफोर आई कंक्लूड, एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमने गैदर किया है यहाँ से, वो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, द फार्मा कंपनीज और एनीवन एल्स टू टैकल AMR, टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस to take medicines, especially antibiotics, more wisely and cautiously. So I think that is all. Thank you so much for your inputs in this, and thank you. Thank you. Thank you.